see. Yeah, when two sound waves have nearly same frequency, superimpose at any point, there are the regular rise and fall, wavering sound we call it. Okay. And which regular rise and fall of the sound is heard, which is called waxing and waning. Waxing means increasing, waning means decreasing. It is used by the artist to tune their musical instruments, or it is also used to determine the unknown frequency, which we are going to do today. Now, theory part, let us see. Two waves are superimposing at origin. Origin पे x is equal to 0 हो जाएगा. Wave equation, by the way, what is the wave equation? A sin omega t minus kx है ना. तो if they are interacting at origin, तो ये तो 0 हो जाएगा. तो ये पार्ट रहेगा. A sin omega t and A sin omega dash t. So two waves, A sin omega 1t and another wave having different frequencies, A sin omega 2t. दोनों superimpose करेंगे. There will be y1 plus y2. We have put the value. A common लिया. Now this is sin A and sin B. What is the relation? RC and D. What is the relation for sin C plus sin D? It is 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Whole thing will be sin. I mean C and this whole thing will be D. तो यहाँ पे वैल्यू इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. तो 2a already is there, sin C plus D. So this plus this 2 by 2 also 2 common लेके cancel हो जाएगा. Pi will come out, f1 plus ft and t this side come out. ऐसे ही cos का function में minus है, 2 getting cancelled, pi and t taken common. तो bracket में f1 plus f2 and here f1 minus m2. And here is the sin, here is the cos. So this is the trigonometrical, mathematical part of this. और उसको हमने, we can write it like this in bracket. Waxing or waning depends on the term this. Cos वाले term पे depend. Cos वाला term हमने पहले लिख दिया था. ये वाला term इधर shift कर दिया. ये वाला term पे depend करेगा. Cos pi f1 minus f2 into t. तो intensity is 0, मतलब fading sound. Decreasing sound means intensity will be 0. Amplitudes are equal. So sound intensity will be 0 and then it will be maximum. So waxing and waning depends upon the cos function, which is having the difference of frequencies in it. So intensity is 0 when the term is 0. ये whole term 0. Cos का term 0 हो जाएगा. That means and maximum के लिए this cos का term plus minus 1. Minus is also taken into maximum because एम्पलीट्यूड में स्क्वायर हो जाता है. तो स्क्वायर में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो this is okay, this part is okay. थोड़ा सा just let me have some gap here. Things are written very close to each other. Can you see? cos वाला टर्म जो है ये, are you there? Yeah. Sin C plus sin D. We have just seen this much only. Two equations we have taken. X वाला term 0 ले लिया because origin पर we can interact them. We can have their interaction. X will become 0. The equation has become easier one. Sin C plus sin D से ये resultant equation है beats की. And cos वाला term minus जिसमें frequency का difference है. That represents the amplitude. And cos के term पर depend करेगा maximum intensity or minimum intensity. When this thing becomes 0, so you will hear minimum sound or 0 sound. When this thing become maximum plus minus 1, you get the louder sound. So that is maxima and minima भी here. तो देखिए इसमें अभी maxima के लिए, for maxima we also called it waxing. Cos की value should be plus minus 1. तो प्लस 1 कब होता है? 0 पर. माइनस 1 कब होगा? जब cos 180 डिग्री है. फिर प्लस 1 कब होगा? जब 2 पाई है. कैन यू सी? प्लस
minus 1. Cosine function will be plus 1 when it is 0. When it is pi, then it will be minus 1. Again, pi per 3 pi. So this plus 1. So this term will be these value. इस values के लिए we are going to get plus minus 1. तो pi तो cancel हो जाएगा इधर, और t के लिए सिंप्लीफाई करेंगे. t ये टर्म इधर भेज देंगे इस तरफ डिनोमिनेटर में. फर्स्ट टर्म में 0 तो 0 हो गया. सेकंड टर्म पाई हैज बीन कैंसिल. देखो यहाँ पर ये पाई सब तरफ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा 1. तो 1 अपॉन f1 माइनस f2. यहाँ पे क्या है 2 अपॉन f1 माइनस f2 एंड सो ऑन लाइक दिस 3 अपॉन f1 तो एट दिस टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेगी. फिर इस टाइम पर मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेगी. फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम साउंड एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम साउंड. रेगुलर इंटरवल्स हैं ये. एट दिस टाइम इंटरवल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ती है. ठीक है. एंड मिनिमम के लिए ओके टाइम ये टाइम है और फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें. मैक्सिमम टाइम की फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो हु इज ज्वाइनिंग सो लेट? Who is that? Tomorrow onwards I will close the meeting, you know. What 4:55 you have to join 4:55 per, and meeting will be logged immediately after 5. Clear to everyone? चलो. Yes, sir. तो join in time tomorrow onwards everybody. तो देखिए यहाँ पर एक मिनट, just let me go back. Can you see? Yes, sir. एक मिनट थोड़ा सा शिफ्ट करने दो इसको. हाँ या तो इस दिस पर्टिकुलर टाइम वी गेट द मैक्सिमम साउंड. तो डिफरेंस ऑफ टू टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ बीट फिनोमिना. तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा इज आल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स. इसका डिफरेंस ले लीजिए. एनी टू कंसेक्यूटिव टाइम इन पॉइंट ऑफ टाइम. इसका टाइम इंटरवल लिया तो ये आ गया. और टाइम इंटरवल का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, वी गेट द बीट फ्रीक्वेंसी. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ बीट. और बीट फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? Reciprocal of time period. Can you see here? Beat frequency is 1 upon TV. TV is the time period of beat phenomena. So 1 upon T. Or TV is what? Time period of beat is this much. So reciprocal हो जाएगा, ये आ जाएगा. This is called frequency of beat frequency we call it, which is difference of two. दोनों waves की जो frequency है that we get. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें ऊपर से, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इट विल बी 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f2. दिस इज बिकमिंग f1 माइनस f2. तो दिस इज नथिंग बट ए बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेव्स. नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है, तो वन इज हैविंग f1, अदर इज हैविंग f2. तो विच एवर इज बिगर, डिफरेंस लिखते हैं. इसमें हो सकता है f2 इज बिगर, तो f2 को पहले लिखेंगे f1. We can write it like this. Beat frequency is difference of two frequencies of the waves. ठीक है. तो इस तो we get beat frequency मतलब एक for one in 1 second how many louder sound will be obtained. ये क्या है? Time period of beat. It is after how much time we get the louder sound. उसको reciprocal कर दिया. Louder sound per second. Beat frequency को कैसे define करेंगे? Louder sound per second. It will be louder or minimum sounds second. मिनिमम मैंने क्यों लिखा? मिनिमम के लिए आपको 0 लेना पड़ेगा. यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 लेंगे. सेम थिंग विल बी ऑब्टेन. दैट यू हैव टू डू योर ओन. मिनिमम का मैंने किया है क्या? नहीं किया. मैं जस्ट आई हैव लेफ्ट इट. फॉर मिनिमम यू डू योर ओन. एक मिनट, जस्ट लेट मी remove this. देखिए ओके ये या for minimum sound
सेम रिजल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा मतलब दे आर इक्वी स्पेस, यू कैन डू, यू आर टू डू योर ओन। सेम ऐसे ही आएगा, एक मिनट, देयर इज नो स्पेस टू शो यू फुल। ठीक है, तो दिस वाज द थ्योरी पार्ट। यहाँ पे देखो, दिस फर्स्ट वी डिड दिस मच प्लस, मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए 0, मैक्सिमा के लिए +-1 लिखा, और इसके लिए हमने सॉल्व किया, 0 के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा। हाउ डिड वी सॉल्व? कॉस की वैल्यू, cos is the amplitude of this beat phenomena। तो इसके लिए हमने सॉल्व किया, टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज दिस, and reciprocal of this is called beat frequency, and which is difference of two frequencies of waves in these loud beat frequency means, यहाँ पे देखो, beat frequency FB means these difference of two frequencies will be number of beats per second। FB क्या है? beat per second, और number of louder sounds per second, number of louder sounds per second। ठीक है, is nothing but a beat। मिनिमम का भी सेम रहेगा। तो ठीक है, बीट अगर आप काउंट कर सकते हैं एक सेकंड में कितनी बार लाउडर साउंड मिली है, तो आप दैट विल बी नथिंग बट ए बीट फ्रीक्वेंसी विच इज डिफरेंस अप टू। तो देयर थियरी पार्ट हो गया इसका। डायग्राम में देखो, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। वन वेव इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, उसका जो एम्पलीट्यूड है y विद रिस्पेक्ट टू t, और दूसरे एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है इनफैक्ट, y द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी, एम्पलीट्यूड इज 1 SI यूनिट, इसका भी 1 SI यूनिट है एम्पलीट्यूड। ठीक है, कैन यू सी, और नेगेटिव -1, इधर भी -1, एंड नाउ these two waves are interacting at any point। यहाँ पर देखिए, दोनों बोथ आर आउट ऑफ फेज, दोनों डाउनवर्ड है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे वन इज डाउन, अदर इज अप, तो यहाँ पर बोथ विल कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यहाँ पे 0 इंटेंसिटी हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे दोनों के वाइब्रेशन अप है, देखो, कैन यू सी बोथ आर इन पीक पोजिशन, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, दैट इज 2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, उससे मैक्सिमम इंटेंसिटी 1 + 1 2 हो गया। तो लाइक दिस, so wherever they are out of phase, minimum intensity, whenever you have to stand at one point, you have to listen their sound, you don't have to move, it is with respect to time it is changing, it is the time dependent phenomena। all right, so after some time again it will be reaching to the peak value, both are, यहाँ पे देखिए दोनों अपोजिट फेज में हो जाएंगे, फिर से यहाँ पर कैंसिलिंग इफेक्ट, यहाँ भी कैंसिलिंग इफेक्ट, यहाँ पर सेम वाइब्रेशन विल बी टुगेदर अप लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज, दिस इज बीट, लाउडर साउंड, मिनिमम साउंड, फिर लाउडर साउंड, मिनिमम साउंड लाइक दिस। ठीक है, गॉट इट? कुड यू गेट दिस डायग्राम का क्लू? कुड यू फील दैट जब दोनों अपोजिट, इसमें देखो वाइब्रेशन डाउन है, इसमें अप है, both will cancel each other, it is phenomena of सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे दोनों के वाइब्रेशंस अपवर्ड है, तो वी आर गेटिंग द पीक वैल्यू, लाउडर साउंड। अच्छा, ये देखो, बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट मींस, यहाँ से मिनिमम टू मिनिमम साउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट, और मिनिमम से मैक्सिमम साउंड का हाफ टाइम पीरियड ऑफ बीट। गॉट इट? so let's do one question। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, two waves given by y1 is equal to a sin 510 pi t and y2 is a sin 500 pi t, then find number of beats produced per minute। एक मिनट में कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी? कैन यू डू इट हियर इटसेल्फ एंड टेल मी द आंसर? एंड होमवर्क इज आल्सो पेंडिंग, है ना? बोलिए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए।
Getting? Yes. Omega 1 and omega beat frequency. Are you there or not? Yes, sir. Yes. F2 निकाल लेंगे पहले. क्या होता है? ओमेगा होता है. ठीक है. कोफिशिएंट इज ओमेगा. ओमेगा 1 is 510 pi, but omega is 2 pi f. तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. F1 will be 255 हर्ट्ज. ओमेगा 2 सेकंड वाली वेव से हमें क्या मिलेगा? 250. F2 will be 250 हर्ट्ज like this. तो दोनों का जो डिफरेंस है, difference of both the frequency is called beat frequency. So 5 beats per second, that is 5 hertz. तो क्या आंसर क्या होगा फिर? What will be the answer? Per minute निकालें, in 1 minute. This is in 1 second. 1 second में आपको 5 times louder sound and 5 times minimum sound सुनाई पड़ेगी. But 1 minute में निकालना है, तो into 60 कर देंगे. 300 beats in 1 minute. 1 minute if you are able to count 300 times louder sound or 300 times minimum sound, that is waning. Got it? So this question was asked in competitive examination. NEET में पूछा गया. This was asked in NEET examination, you know. Clear to everyone? Yes, sir. To ask anything till now, अभी तक जो हमने किया है, theory part में हमने क्या सीखा? Beat frequency is difference of two frequencies. That is per second. यहाँ पे per minute पूछा है. और second part I am asking you, find minimum time between two successive waxing and waning. दो यहाँ पे देखो, ये waning है, this is waning, this is waxing. तो दोनों के बीच में मिनिमम टाइम कितना होगा? मतलब ये टाइम इंटरवल, दिस एक्स एक्सिस शोज द टाइम इंटरवल. इतना टाइम चाहिए हमें. ये कैन यू थिंक ऑफ दिस पार्ट? तो देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी है अपने पास, कितनी डिफरेंस ऑफ टू पीरियड? 5 बीट है, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा. एंड दैट विल बी हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड. ये एक्चुअल में टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, उसका हाफ है ये वैक्सिंग एंड वेनिंग के बीच का टाइम पीरियड. तो बीट टाइम पीरियड ऑफ बीट इज रेसिप्रोकल ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी. 1/5 का 1/5 हो जाएगा 0.2 सेकेंड. और रिक्वायर्ड टाइम इज हाफ ऑफ द बीट पीरियड टाइम, है ना. हाफ है उसका. यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए बस, मैक्सिमम से मिनिमम का. उसको भी हाफ कर दिया हमने. तो 0.2 को हाफ कर दिया 0.1 सेकेंड. गॉट इट? तो दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन. तो anything you want to ask till now? No problem. No, sir. सर एक बार Questions, स्टार्टिंग Rachel? से स्क्रॉल कर लेते हैं. देखो, ये पहले हमने ये किया बीट फिनोमिना का. ओके, वर्टिकल स्क्रॉल करते देखते कितना देख सकते हैं. दिस इज द, ओके, यहाँ तक देख लीजिए पहले. डन सर. Now for maxima and minima. For maxima we have done only. Minima के लिए भी सेम आएगा.
फॉर मिनिमम साउंड सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। Difference should not be more than 10. I was telling you, no? Difference should not be more than 10. F1 minus F2 should be less than or equal to 10 hertz. क्यों? Beat time period of beat will be 1 by 10, so 0.1, so 0.1 second. If difference goes up, time period will go down. Time period अगर time period और कम हो गया, this is the time interval our ears can distinguish. अगर first wave आ गई 0 second पर, second wave should come after 0.1 second, है ना? Then only we can distinguish it. Otherwise, we cannot hear the second wave. तो जैसे एको फिनोमिना है, एको में आप क्या करते हैं? बहुत बड़ा bigger hall is there, you clap. So when it goes and comes back, if this distance is more than 17 meter, then only we can hear the echo, otherwise not. क्योंकि अगर distance कम है, it will go early and come back early. तो 0.1 second से पहले अगर आ गई तो we cannot listen the second sound, reflected sound. So if wall is or mountain or wall is more than 17 meter away, we can have the time bigger time interval than 0.1 second. We can hear the echo, reflected sound. So therefore, I was telling difference should be less than or equal to 10 hertz. Then only we can hear it. But if difference is more, beat phenomena will take place, but we cannot distinguish. हमें पता नहीं लगेगा. Wavering sound है, up and down sound नहीं सुनाई पड़ती. That's what I was telling. Frequency difference should not be much, more than 10. ये आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. These two waves superimposing and creating this sound, है ना? Like this, minimum maximum sound. Amplitude is also going up. देखो 2 amplitude. ये A है. This is also A. This is 2 times. All right. Clear? Now, other application हम देखेंगे कि how to find out the unknown frequency. जैसे ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. उससे पहले लेट मी टेल यू वन पॉइंट. अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, सपोज वी हैव द ट्यूनिंग फोर्क. If you apply some tape here, its weight will increase, inertia will increase, it will vibrate slowly, frequency will decrease. अगर आपने किसी ट्यूनिंग फोर्क पे टेप लगा दिया या कोई वेट अटैच कर दिया, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स. टेप लगा दिया या वैक्स लगा दिया या कोई और उसमें मेटल मैग्नेट लगा दिया वहां पर, तो इट विल ऑसिलेट स्लोली, फ्रीक्वेंसी विल ड्रॉप. और इनके साथ फाइलिंग मतलब क्या होता है? रिमूविंग द मेटल, इट्स वेट विल ड्रॉप, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. बट फाइलिंग करने से क्या, परमानेंटली उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. इट विल नो लॉन्गर हैव द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. तो फाइलिंग नहीं करते जनरली, टेप लगा देते हैं. वेट बाय अटैचिंग द वेट, its frequency we are changing. Why we are changing? Because we have to find out the unknown frequency. So we have to do like this. अभी हम निकालेंगे कैसे करते हैं. In case of the tight string, in case of the string, frequency is directly proportional to tension. Do we remember the formula? String fixed at both the ends. क्या formula था? Frequency was 1 upon fundamental frequency was like this. ये फार्मूला था. तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन. अगर आप टेंशन बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी विल गो अप. गेटिंग और नॉट? इन केस ऑफ द स्ट्रिंग, इफ यू इंक्रीज द टेंशन, फ्रीक्वेंसी गोज अप. इफ यू डिक्रीज द टेंशन, फ्रीक्वेंसी गोज डाउन. दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है? तो नाउ हाउ टू गेट द अननोन फ्रीक्वेंसी. ए सॉल्व एग्जांपल यू हैव टू डू योर ओन. 15.6. Let us do unsolved example, exercise question. और उसके बाद होमवर्क, कल वाला होमवर्क किया आप लोगों ने?
मैंने दिया था, that you remind me to solve. After the break we'll do. देखिए, do we have time? Let's use that whatever time we have. We'll jo- we'll join again. फिर से join करते will continue. Time is not there.